morning students, welcome back to SST class of 7th. In our previous video, we had completed the subject enrichment chapter that was medieval architecture, and in today's video we will be discussing the another subject enrichment chapter, that is chapter number 9 of geography, that is the human environment, settlement, communication and transport. Okay, सो आज हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सेटल्ड है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन कैसे सेटल्ड है पर्टिकुलर एरिया में, देन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज सेटलमेंट. A settlement can be defined as the place where people build their houses. तो settlement को हम define कर सकते हैं simple language में. It is a place where people build their houses. तो ऐसी जगह जहाँ लोग घर बनाते हैं उसे हम settlement कहते हैं. ओके, एक तो इंग्लिश का settlement हो जाता है जिसका मतलब होता है समझौता. But in the terms of geography, settlement means a place where houses are built. Okay, then there are two types of settlements. अगर हम settlements देखें तो दो types के होते हैं. First one is rural settlement and second one is urban settlement. Rural means related to the village and urban means related to the city. So let us read about the rural settlements. Villages come under the category of rural settlements. तो जो villages हैं, गांव हैं, they come under the category of rural settlements. The population in this settlement is small and the density is quite low. जो यहाँ की population है वो काफी क्या है, small है, and जो density है वो भी काफी लो है, scattered है. Then अगर हम urban settlement की बात करें तो the settlement in which most of the people are involved in commerce, trade, industry, etc. तो ऐसा settlement जिसमें ज़्यादातर people या तो किसी व्यापार में या तो किसी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व है, मेनली ऑफ सिटीज, उसे हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे. दे आर मच बिगर इन साइज देन रूरल सेटलमेंट. तो ये काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट, एंड द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी लार्ज. और जो यहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या होती है वो भी काफी लार्ज होती है एज कंपेयर टू द विलेज सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट. ओके, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. अब हम देखेंगे जो रूरल सेटलमेंट्स है उसके कितने पैटर्न्स हैं. इन 4 पैटर्न्स इट इज डिवाइडेड. द फर्स्ट वन इज न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न्स. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स द हाउसेस आर अराउंड अ सेंटर. तो इस तरह के सेटलमेंट में जो हाउसेस होती हैं वो सेंटर में होती है. जैसे सेल में न्यूक्लियस जो होता है बीचों बीच होता है, उसी तरह इस सेटलमेंट्स में जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, दे आर इन द सेंटर. हाउसेस आर क्लोजली बिल्ट इन ए कॉम्पैक्ट पैटर्न. और जो हाउसेस होते हैं काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली बिल्ट अप होते हैं, एंड दे आर मेनली नियर द फर्टाइल प्लेन्स बिकॉज ऑल द फैसिलिटीज आर वेरी अवेलेबल एंड डेंसली पॉपुलेटेड. ओके, देन सेकेंड वन इज स्कैटर्ड सेटलमेंट्स. अब नाम से ही पता चला, स्कैटर्ड मीन्स डिस्पर्स्ड, फैला हुआ. These are mostly found in hilly regions, deserts and forested areas. So ये जो scattered settlement होता है ये hilly region में पाया जाता है, या forest में या desert में जहाँ facilities available नहीं होती है. There is a lack of clear area for agriculture and there is no proper area for agriculture. Then third settlement is linear settlement. Linear means straight. So this type of settlement involves along a road, a river having rows of houses facing each other. तो इस तरह के settlement में क्या होता है, एक road के किनारे houses are built and the houses are made in such a way that they are facing each other. एक रो में बने होते, एक कतार में, एक क्रम में बने होते हैं and their houses are facing each other. Then radial settlements. When streets radiate from a common point in several directions, a radial settlement develops. तो जब कई तरह से स्ट्रीट आके एक कॉमन पॉइंट पे फोकस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएट सेटलमेंट. जैसे रेडिएशन होता है, रेज होता है, एक कॉमन पॉइंट से चारों तरफ इमर्ज होती है, उसी तरह ढेर सारे रोड आके एक कॉमन पॉइंट पे
फोकस करते हैं उस तरह के सेटलमेंट को, ढेर सारे रोड आके एक सेटलमेंट में आके फिक्स हो जाते हैं, वैसे सेटलमेंट्स को हम रेडियल सेटलमेंट्स कहेंगे। एज यू कैन सी इन द फिगर, रेडियल सेटलमेंट को आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीट, और जो हाउसेस होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन यूजुअली स्ट्रीट के किनारे होता है, अलोंग द स्ट्रीट। ओके, अर्बन सेटलमेंट टाइप्स। अब हम अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। It includes center of provinces, districts, states, capital cities of countries and central administrative divisions. तो इस टाउन में ऐसे सेटलमेंट्स आएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्टेट्स के हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन DC, कैनबरा एंड न्यू दिल्ली। ओके, नाउ सेकेंड इज डिफेंस टाउन्स। डिफेंस मतलब सुरक्षा। ठीक, These towns are the center of military activities. तो ये ऐसे टाउन्स हैं जो कि सेंटर है मिलिट्री एक्टिविटीज के, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए दानापुर, जालंधर एंड महो। ठीक, नाउ कल्चरल टाउन्स। अब नाम से पता चल रहा है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। ओके, सो कल्चरल टाउन्स आर द सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन। ओके, सो दे आर द सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल शांति निकेतन in India and Oxford and Cambridge in UK, that is in London. Okay, then fourth one is industrial towns. These towns have some kind of manufacturing industries. तो ये ऐसे towns हैं जिनके आसपास बहुत सारी manufacturing industries या factories हैं, जैसे कि दुर्गापुर in West Bengal and Osaka in Japan. Rural अर्बन इंटरडिपेंडेंस। अब रूरल और अर्बन कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Villages and towns are dependent on each other as they have a strong relationship. तो जो villages है और towns है वो एक दूसरे पे interdependent है क्योंकि उनका बहुत ही strong relationship है। See, the villages supply raw materials to the towns and the towns manufacture and sell it into the market. So both are interdependent on each other. अगर टाउन्स नहीं होंगे तो विलेज अपना रॉ मटेरियल किसको भेजेगा, और अगर विलेजेस नहीं होंगे तो टाउन्स को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम ट्रांसपोर्ट यातायात की बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी कंट्री का डेवलप या ग्रोथ करने के लिए। There are 4 types of transport system we have studied before also: roadways, railways, waterways and airways. Okay, so first is roadways. They are the common means of transport for short distances. ये short distances के लिए बहुत common means है। जैसे अगर हमें मार्केट जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, we will use bike and we will go through road. Roads are of 2 types, metal and non-metal, and roads are of 2 types, metal and non-metal. Metal means pakka road and unmetal means kacha road. Metal road are found in cities while unmetal roads are found in villages. Okay, now railways की बात करें so they are the fastest land transport. अगर land transport की बात करें तो वो fastest means है and most popular, और काफ़ी सस्ता और किफ़ायती भी होता है for long distances. Okay, waterways, they are the cheapest means of transport and are suitable for heavy and bulky goods. तो waterways जो है वो cheapest means of transport है क्योंकि इसमें कोई fuel नहीं लगता, कोई रोड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, and they are useful for carrying heavy and bulky goods. तो बहुत भारी सामान के जो transportation है we can do through waterways, and waterways is important for the international trade. जो भी international trade होता है वो waterways के द्वारा ही होता है। Airways. Airways are the fastest and the most expensive means of transport developed in early 20th century. It was developed by Wright brothers. So first aeroplane was invented by Wright brothers. So airways जो है very fastest mode of transport and it is very expensive. Everybody can't afford it. Now communication. What is communication? It means the sharing of ideas and information through different mediums. जब हम अपने
बातों को या विचारों को दूसरों के सामने रख पाते हैं अलग अलग माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. ओके. Now, the world is known as global village, and with the help of these communication, now the world looks very small, like a global village. है ना? Previously, we used to connect with our friends or relatives in a very long process. बहुत लंबा टाइम लगता था मिलने जाना, और ट्रांसपोर्ट नहीं था, बात करना हो, फ़ोन नहीं था, so like that. But now within a second we can communicate with our friends and relatives anywhere in the world. So radio, television, mobile are some means of communication. Now mass media, mass means on a large scale, ऐसे means of communication जो large scale पे होते हैं, जैसे कि radio, television and newspaper. ठीक है. Large number of people can communicate at the same time with newspapers, radios and television. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही समय पे कम्युनिकेट कर पाएँ, उस मीडियम को हम मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया कहेंगे, जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है एंड न्यूज़पेपर है. दिस इज कॉल्ड मास मीडिया. दीज मोड्स आर नाउ यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. तो ये जो मास मीडिया, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड. ठीक है. देन जैसे कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं, जैसे BBC, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. देन PTI, दैट इज इन इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट in today's chapter, the human environment. Okay, so we studied what is settlement, then types of settlement, that is urban and rural, then types of urban and rural settlement, then means of transport and means of communication. Okay, I hope you all have understood the topic well. Now we will be discussing the exercises of the chapter. Now we will be discussing the exercise of the chapter. So children, open page number 178. Question number A, multiple choice questions. First one, which of the following is not a rural settlement? Options are defense town, nucleated pattern, dispersed settlement. So the right answer is defense town. Then second is a settlement in which people are involved in non-agricultural activities. Options are rural settlement, urban settlement and dwellings. The right answer is urban settlement. Okay, now fill in the blanks. First one, linear settlements are elongated settlements where the dwellings develop along a road or a river. Okay, now question number 2, dash towns developed around a large port or harbour. So right answer is port. Then third one, the progress in science and technology has developed dash means of transport. The right answer is fast. Fourth one, the Great Lakes between the USA and dash is the world's largest and busiest inland waterway. The right answer is Canada. Now question C, that is state whether the following statements are true or false. First one, administrative towns are Durgapur, Pittsburgh and Osaka. So the answer is false. These are industrial towns. Then second, defense towns develop around a large port or harbour. The answer is wrong. Port towns. Okay? Then third, the Trans-Siberian Railways is the longest railway system. The answer is true. Then fourth one, the Mediterranean and the Indian sea route is the most important sea route of the world. Answer is false. It is the second most busiest sea route of the world. Then fifth one, newspaper, television and radio are called the mass media. The right answer is true. Now match the following. Administrative towns, Washington DC and Canberra. Defense towns, Danapur, Jalandhar, Mahou. Then port towns, Mumbai, Kolkata and New York. Religious towns, Haridwar, Mecca, Vatican City. Industrial towns, Durgapur, Pittsburgh and Osaka. Now question number A, again multiple choice questions. First one, it connects the Atlantic and the Pacific Oceans. Options are Cape of Good Hope, Suez Canal and Panama Canal. So the right answer is Panama Canal. Then second one, he developed the Morse code. Options are
Alexander Graham Bell, Samuel Morse, none of these. The right answer is Samuel Morse. So children, this was about the exercises. Now question B, that is short answer questions that you have to do by yourself. Then long question answers, that also you have to do by yourself. You have to read the chapter thoroughly. आपको chapter एक बार thoroughly पढ़ना पड़ेगा और खुद से ये करना पड़ेगा. That is in your homework copy. Now HOTS, that's also you have to do in your homework copy. ठीक है, ये आपका subject enrichment का chapter है. So no need to do this in your classwork copy. Okay, so जो भी exercises है आपकी वो सारा आप book में करोगे and you will send it as a homework, and this notes question answer you will write in your homework copy. Okay, I hope you all have understood this chapter in a short. So till that time, take care of yourself and have a good day. Thank you.